Welcome to Monty's Kitchen. Today we are making fish molee with sea bass. Fish molee is the South Indian dish. Today I make different way. Let's start cooking. You will need turmeric powder, coriander fresh, coriander whole, curry leaves, ginger garlic paste, chopped onion, green chili, little coriander powder, cumin powder and garnish, and coconut milk and salt. Add oil to the pan. Add whole mustard seed. Curry leaves. Fine chopped onion. Add 1 teaspoon turmeric powder. Add 1 teaspoon coriander powder. Add 1 teaspoon cumin powder. Add some salt. Mix. Add some chopped garlic and ginger. Add 1 teaspoon garlic and ginger paste. Then add coconut milk. Why did you become a chef? जब हमारे घर पे मेहमान आते थे, फैमिली जब आती थी ना, तो मैं ये देखता था कि मेरी माँ जब खाना बनाती थी, अलग अलग डिशेस बनाती थी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो वो जब हम खाते थे ना, तो हमें ऐसा लगता था कि यार मुझे सीखना चाहिए ये काम, क्यों नहीं ये खाना मैं क्यों नहीं बना सकता। तो जब वो मैंने पिक किया, तो मैं फिर इसी लाइन में होटल में जाके काम सीखने के लिए चला गया। होटल में जब काम सीखने के लिए चला गया, तो वहाँ पर मुझे देख के ना लोग ऐसा लगता था कि ये कितने अच्छे शेफ है, कितने बड़े बड़े शेफ है, क्या क्या बना सकते, मैं क्यों नहीं बना सकता। तो वहाँ से जब मैं गया, तो वहाँ पर मैं सीखने लग गया कि मैं ये चीज़ें पिक करूँ, इनसे सीखूँ, और फिर मैं सीखता गया, आज भी सीख रहा हूँ। Add oil to hot pan. Fry your fish until golden. Now is ready, plate and serve.
try my recipe at home. Enjoy, like and subscribe.